Hi all, welcome to ForMyFootball. ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെയുള്ളത് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് മിസ്റ്റർ സുഭാഷിഷ് റോയ് ചൗധരി. വെൽക്കം സർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാരിയോ. Hi, head coach of Forca Kochi. Thank you for having me. Thank you. Nice. So let's get into the podcast. So how is Kerala? It's nice. It's nice. I really feel it's very fun. I've been here 2 weeks. I feel at home. Really, really, people have been very welcoming. People sometimes see me this week, and everybody asks me the same. How's Kerala? How's Kerala? How's Kochi? And it feels like home. I feel very comfortable here. People have treated me very well, and I feel very good. And Subhasish sir, how is being back home? Kerala, see, before I also, Yeah. the guys, before also I was with the Kerala Blaster. Yes. So I know everything about Kerala people and all, how much they are mad about football. So yes, I feel good, very good. Being back to Yeah, Forca Kochi. How's Forca Kochi? How's the whole team? Yeah, it's really surprising for me because it's a new league, it's a new club. When I thought, okay, I'm going to a new club, you're not going to have so much fans, not going to be very organized, but no, it's very organized, the club, from the management to the bottom. A lot of fans, a lot of people sending me messages, and it's crazy because it's a brand new club, and you would think, a club in Europe would take time to get fans set. But here it's the like Subhasish is saying, people are mad for football, and I can feel their passion every day. This is your first time in India. No, I've been here also before to play AFC Cup. I've been here 4 times. I played 2 times in Kolkata, Mohun Bagan. I played in Ahmedabad, Chennai, and I played in Guwahati against Minerva Punjab. Then I've been here, but football in the games, you come, hotel, stadium, and you don't see much. This is the first time I stay. You're exploring. Yeah, exploring a bit more. How about you, sir? Then how is it different from Kerala Blasters to Forca Kochi? See, now for Forca Kochi, almost see I just see, if you are talking about food, about stay, about it, Or not that. people are saying that is very main thing. So yes, the Kerala football, the people, they are mad. So that's why I very excited. So how was your how did you start your journey? How was आपका journey थोड़ा समझाइए ना audience के लिए. मेरा जानी तो बहुत ही क्या बोलेगा, गरीब घर से आया है. मतलब अब तो मेरा गूगल करेगा तो मेरे सब कुछ पता चल जाएगा. सो मैं कुछ भी नहीं था, उसी जगह से स्टार्ट हुआ है. पहले तो मैं रास्ते पे चिकन काटता था, चिकन जो शॉप था उसमें काम करता था. उसके बीच में अगर थोड़ा सा टाइम मिलता था तो मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि जब दूसरे के दुकान में जब आप काम करते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता है. तो मैं रात को 3 बजे उठ के ऐसा मतलब वो दुकान प्रैक्टिस करके फिर दुकान में आके काम करना, फिर शाम को जाके ये करना. तो ये कर करके इस जगह पे पहुँचा हूँ. आपका पहला फुटबॉलिंग एक्सपीरियंस बताना. आप कैसे फुटबॉल में एंट्री कैसे? फुटबॉल में पहला तो एक स्कूल लेवल में था, एक फुटबॉल हो रहा था. तो उसी टाइम उनको एक गोलकीपर चाहिए था, तो नहीं था, वो कोई नहीं था. तो मैं खेला तो बेस्ट गोलकीपर हो गया, ये हो गया. उधर से स्टार्ट हुआ मेरा करियर. फिर मैं साई में चला गया, 8 महीना था. उसके बाद मैं शुगोदा कप खेला 1999. शुगोदा कप खेला, बेस्ट गोलकीपर हो गया, सब कुछ हुआ. फिर उधर से अमल दत्त तो टालीगंज में लेके गया था, कैलकाटा. फिर मैं टाटा फुटबॉल में अकेडमी चला गया. फिर अंडर 16, 17, 18, 19 इंडियन नेशनल टीम में स्टार्ट किया. फिर मैं पास आउट हो गए, ईस्ट बंगाल साइन किया. ईस्ट बंगाल 1 साल था. फिर मैं ईस्ट बंगाल से महिंद्रा साइन किया 5 साल. महिंद्रा आई लीग का टीम था. फिर उसके बाद डेम्पो में गया, डेम्पो में 5 साल था. फिर उसके बाद ये ISL आया, फिर मैं ATK में साइन किया. उसके बाद दिल्ली डायनामोस, फिर उसके बाद गोवा FC, and then Kerala Blaster, Jamshedpur and North East. And today I'm So much of experience. Yes, now back to Mario. So tell me your journey, how you came into football. How was football for you? How it all? It's same as any Portuguese kid. Yeah, I am. We are, you guys. Yeah, it's in our blood, and maybe we're the only difference between the passion between us and India. Maybe is
we only have one sport. You have cricket. You have I don't know how many medals you had in the Olympic Games. Maybe 6. well, more Portugal only 2, 3 because all We are focused on. yeah, we focus on football. Every young boy in Portugal wants to be the next Ronaldo. My generation was Figo, was Paulo Bento, was Deco, was Rui Costa. Then, as everybody, I played youth football from 5 years. So I started futsal, played all my young age into the club of my town, Feisal Ferreiras. Then, when I was 21, I played in the first team and third division club. Then I started at the time is my home club coaching young kids. Okay. And I start thinking, hey, maybe my future as a player I will not reach top level. I will not be a Ronaldo. I will not be. Then I stay maybe coaching. I'm young. And I start changing. I started coaching and playing, and then I just started coaching and started from U15 to U18, and I made my way up. Then from Portugal, one ex-coach of mine, he went to the United States to coach. He said, Mario, hey, come with me to the United States. And I went to TSF Academy in New Jersey. From there, I went to Thailand, SCG Montong United, the champion of Thailand. Then from there, I was assistant coach, youth coach, assistant coach, and I went to South Korea. South Korea, 4 years in the youth football, Incheon United, and I stepped to professional football as the assistant coach for Bangladesh national team. Bangladesh national team, I become head coach in the Malaysia Super League. From the Malaysia Super League, I go to Abahani, Bangladesh Premier League. I stay 5 years, head coach, 5 years there. Also, during my time at Abahani, I become the interim head coach, caretaker for the national team. And from there, I come to Forca Kochi after 5 years in Bangladesh, your neighbor. I came to India. It was always a goal of mine to come to India. Because when I arrived to Bangladesh, the coaching, and he knows a bit better, the Bangladesh football, everybody looking to India. Players, coaches want to go from Bangladesh to India because the league is better. Then that was one of my goals to come to India. So, you have worked with Asian football more. Yeah. So, Asian already. what differences do you feel about Asian and European football? Why is for example, India only? Yeah. What is lacking in Indian football? Youth football. I think youth football is the main difference at the grassroots level. When I arrived to Bangladesh, I give you an example. There was no academies, no youth football. Then in Portugal, you have youth football. All the money is into youth football because Portugal is a selling country, right? You produce players and you sell them to Real Madrid, you sell them to Manchester City. Then clubs want to produce and want to invest in young. And I think in India, I've been here long time, is maybe the same thing. The grassroots, it's that, in Bangladesh, no clubs have academies. And I think the level in the grassroots is very, very different compared to all Asia, to Europe. Well, what is your आपका राय क्या है? मतलब इंडियन फुटबॉल का यूरोपियन फुटबॉल से आप भी ट्रेनिंग सब बाहर भी किया है. सो व्हाट डू यू थिंक? फर्क क्या है? बहुत फर्क है. अभी आप देखो, मैंने अभी कोच से बात कर रहा था. मैं जब पोर्चुगीज में था, एफसी पोर्चुगल वो प्रैक्टिस देखा था. उन लोगों का जो जूनियर लेवल का 10 ग्राउंड था. 10 ग्राउंड एकेडमी फैसिलिटीज. एक ग्राउंड का मैं बात कर रहा हूँ, एक ही एकेडमी का बात कर रहा हूँ, उसका 10 ग्राउंड था. हमारे पास तो इंडिया में एक भी प्रॉपर ग्राउंड तो छोड़, कोई एकेडमी भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है. तो कोच जो बोला है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट, वो कम उधर से बच्चा आएगा, उधर से ही आपको बनाना है. और उसी लेवल में हम लोगों का ये नहीं. मेन थिंग इज पैसा का बात है. पैसा जब चीज़ में आएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट आना चाहिए. अभी हम देख रहे हैं ना, इन इंडिया क्रिकेट इज सेलिब्रेटेड टू द टॉप, and football, there are fans for football, but not like cricket. There is a huge difference. Even how players are treated, everything difference है. Accessibility के लिए clubs वाला players. What do you think? What do you think about that? किस में how Indian football and Indian cricket का बहुत बड़ा फर्क है. बहुत बड़ा फर्क है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद ये बहुत बड़ा न्यूज़ ना बन जाए, ये फैक्ट है. मैंने खुद
आज से बहुत सारे आदमी बात करते हैं ना, इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलता है? हाँ कभी नहीं खेलेगा, कभी भी नहीं खेलेगा। सुनने में खराब लग रहा है ना, कभी नहीं खेल सकता है जब तक वो चेंज नहीं होगा। जो हम लोगों का थिंकिंग है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फुटबॉल कहाँ पे पहुँच गया, और जो बच्चा लोग अभी है ना, कैसे सफ़र कर रहा है आई लीग में, वो मैं जाके 1-2 साल में मैंने देखा आई लीग में। मतलब बच्चों को खाना ठीक से नहीं मिलता। अगर मैं आपको मजाक नहीं करूँगा, मैं 2 साल में था, 2 आई लीग में खेला, बच्चे लोग को ठीक से खाना भी नहीं मिलता है। पैसा तो दूर की बात है, वो लोग पैसा के लिए फाइल करता है, फेडरेशन के पास जाता है, फिर फेडरेशन कोर्ट के पास ऐसे जाके फिर पैसा मिलता है, ठीक से ये नहीं मिलता है। एक आपको एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके घर का कोई भाई होगा, राइट? अगर वो दिखेगा फुटबॉल के ऐसे चल रहा है, वो 1-2 साल जाएगा, वो अपना लाइफ तो उधर ही खत्म कर देना। हम लोग तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, हम लोग तो फुटबॉल ही मेन चीज़ है। तो फुटबॉल को हम फॉलो करते करते ही पढ़ाई का जो टाइम, मेन पढ़ाई का जो टाइम है, वो हम फुटबॉल में दिया, क्योंकि हम लोग टॉप लेवल में जाए। तो जब मैं कोई एक आई लीग में गया, अभी आई लीग में 2-3 क्लब आपको ठीक से पैसा देता है, एंड आप जाके चेक कर लीजिएगा, कोई टीम पैसा नहीं देता, और वो भी देता होगा 10-15 हज़ार। एक लड़का जो स्कूल लेवल सब कुछ छोड़ के आ गया फुटबॉल खेलने के लिए, उसको 10-15 हज़ार मिल रहा है। आज से 10 साल बाद अगर ऐसे ही चलता गया, ये फुटबॉल खत्म हो जाएगा। सही है, ग्रोथ फॉर प्लेयर्स आर लाइक लिमिटेड। वेरी इज लाइक ए, ध्यान देना पड़ेगा फेडरेशन को। मेरे सुनने में खराब लग रहा है, शायद मेरे को बहुत सारे आदमी लोग ऐसा बात कर रहे हैं, क्यों बोला ऐसा, बोलना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बट मेरी रियलिटी है। मैंने खुद देख के आया, ये मेरे आँख के सामने देखा। मैं इतना दिन ISL में था, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं 5 स्टार होटल में था, अच्छे से खा रहा था, अच्छा फिर सीडी, बट वो तो एक कुछ लेवल का कुछ प्लेयर है ना, सम नहीं तो सब प्लेयर नहीं है ना। वो कुछ प्लेयर लेकर तो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता। हाँ सही। आपको तो बच्चे लोग तो आ रहा है, वो तो आई लीग खेलेगा, ये खेलेगा, फिर खेलेगा ना। लेकिन आई लीग का तो अभी हाल है ना, बहुत ही खराब। मैं मतलब मुझे तो बहुत खराब लगा जो आई लीग का देखकर। तो मेरे ख्याल से आई लीग को पूरा ये चेंज करना पड़ेगा, फेडरेशन को थोड़ा सा ध्यान दे। You both have played all levels of football, and you have seen like high level and like lower levels in your life also. So what is a piece of advice you ever received from anyone, so that you get motivated, and by hearing this our audience, players like budding players get motivated so that they can pursue. One thing I say is football is the same everywhere in the world, right? Sometimes, and he had the example, I had the example, is sometimes you have the perfect 5-star hotel, the beautiful pitch, everything great. And then you go to somewhere not so good, and sometimes you can lose your motivation. And it happened to me. I remember when I get to Bangladesh, I was like, oh la la, it's going to be difficult here. But I put in my mind, I come here to do a job, I will do work, and I have to have the same motivation. I think it doesn't matter where you are. Subhasish, we're talking about, if I coach Forca Kochi or I coach Benfica, my mentality has to be the same, always same. If I come here saying, oh, this is Super League Kerala, I just come here 3 months and I go, and and I think that's what's important for the players. That's why I treat these players the same way I treat national team players. I coach World Cup players. And that's very, very important to keep the same mentality. It doesn't matter where you are or where you're from. Sometimes I say, oh, coach, this is Thailand. Oh, this is India. It doesn't matter where you're from. There's Your job. Yeah, you have to do your job, and you have to be professional anyway. Sometimes we think everybody in Europe is great. No, there's bad players in Europe. There's bad coaches. There's bad clubs in Europe also. But you have to have that mentality anywhere. And that's why I tell the players, if it's first division or last division, and at the end of the day, it's football. It's football. 1 ball, 11 players, goal. It's football, What do you think? अब क्या मतलब क्वेश्चन क्या आपका, मतलब वो मोटिवेट कैसे? हाँ, आप कैसे मोटिवेट करके, लाइक आपने अभी बोला था, लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइक आपका चाइल्डहुड से भी आप बहुत स्ट्रगल करके आए हैं इधर। सो आपको भी मोटिवेट करके रखने के लिए कुछ फैक्टर होगा ना, कोई मोटिवेट किया है क्या? क्या है यार, क्या मोटिवेशन दिया है आपने आप से? देखिए, एक चीज़ तो मैं हमेशा मानता हूँ, कोई अगर किसी को मोटिवेट करने से अगर वो बड़ा प्लेयर हो जाएगा, नहीं होता है। एकदम प्लेयर, ठीक है। मैं जब फुटबॉल करियर स्टार्ट किया, मेरे साथ भी तो और बहुत 20,000 25,000 गोलकीपर भी तो मोटिवेट होता है, उसका कोचेस का, इसका सब सपोर्ट। सब तो खेल नहीं सकते ना, मोटिवेट खुद को करना पड़ता, खुद को सिचुएशन। जैसे कोच बोला कि मैं इधर पे ख़त्म नहीं होता ना, मोटिवेट आप अगर जिस चीज़ के, जैसे फुटबॉल मेरे लिए सब कुछ है,
मैं अपना फैमिली से पहले ही फुटबॉल को रखता हूँ, मैं इतना फुटबॉल के लिए पागल हूँ, तो मैं उसमें कभी चीट नहीं करता। मेन थिंग इज कभी भी चीट नहीं करता। तो मेरा मोटिवेशन मैं खुद है, अगर मुझे कोई लेके आया रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मुझे उसको कुछ देना है, वापस देना है, वही मेरा मोटिवेशन है। मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ कि नहीं ये आज कम हो गया और थोड़ा करना है कल। तो मोटिवेट कोई नहीं कर सकता, मोटिवेट खुद को करना है आगे बढ़ने के लिए, ये मेरा थिंकिंग है। सो अभी हम सुपर लीग के बारे में सुना है ना, लाइक आप लोग पार्ट ले रहे हैं सुपर लीग में। सो फुटबॉल का डेवलपमेंट के लिए केरला सुपर लीग जैसा इनिशिएटिव्स कैसा आपको? ये देखिए, एक तो चीज़ अच्छा है क्योंकि इसमें सब कुछ फैसिलिटीज़ अच्छा मिल रहा है, और मैं प्रे करूँगा कि ये अच्छा चले, लॉन्ग टाइम तक चले, क्योंकि आने वाला जनरेशन के लिए। ये जब भी मैं इधर आज हूँ और जो कुछ बच्चे लोग हैं जो नया नया अभी आया है कि अभी जो कोची एफसी में खेलने के लिए, तो अच्छा फैसिलिटीज़ मिला है, वो भी जाके अपना अच्छा बच्चों को बोलेगा कि अच्छी तरह खेल, उधर अच्छा फैसिलिटीज़ मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा कोचेस आ रहा है, अच्छा सीख सकता है। तो इसके लिए ये सब आना बहुत जरूरी है। नॉट इन केरला, एवरी कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, every state should have the सेम सिस्टम, क्योंकि ये अच्छा फैसिलिटीज है ना, अच्छा ये कुछ है, तो मेरे ख्याल से ये गुड है, अच्छा है, मतलब कमिंग जनरेशन के लिए कीप। अभी सुपर लीग केरला का फॉर्मेट भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है। लाइक लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा चांस आ रहे हैं केरला प्लेयर्स को, एंड देर इज 2 positions फॉर under 23 players, yeah, developing players, developing players. So that is a good side from Super League. Yeah. That's a good initiative from Super League here. Actually, because at the end of the day, you have to give the opportunity for the Kerala player. That's Obviously, that is the aim of this league, to develop the players. expertise from outside, and like experienced players like join them, things will get better. I think so. I think the coaching staff also playing with experienced players. They have to learn the most they can now, and also have opportunity. How's the whole team, sir? How's the whole team? Like there are we have met on the launch also. Yeah. Like there were so many players. Yeah. There were so many young players also. I could see so many young players in the squad. How are they? How was the quality? It's no, we have a group now, some experienced players, some young players, but it's just really teach them how to play. Teach them how to be professional. I think that's the role of Subhasish, Rafael Augusto. He's a national ISL champion. Rafael was ISL champion. Midal was a national team player. I think these not older. I don't like to use more experienced players. They have to teach them and to show them how to reach that level. And to reach that level, like Subhasish knows, you have to be consistent and you have to work hard. It's not just like this. Even when you get there, you have to work harder. And I think it's very important for those players to see them close, work with the coaches, work with the players. Say, oh, that's what. Because as a player, I think the younger goalkeepers under Subhasish, they see Subhasish training, say, oh, okay, I have to do this. I have to play at that level. They have a benchmark now. They have a benchmark. They have to work accordingly and reach that way. Yeah, because now they can see, that's Rafael Augusto. That's what I have to do to reach that level if I want to. Then I think for them it's a motivation, but also, wow, I can see from pros. One thing is to be training every day with you, another thing is watching Subhasish on TV. Now I can see him every day, and I think it's very great. It's great. Oh, for the young players, I think great. But like I always say, it's opportunity, but you have to grab it. You have to grab it. Yeah, sometimes that's why sometimes I'm not a big fan. Sometimes in Europe, we should give opportunity. If you're good enough, you will make it in the team. Not just say, 5 players have to play down. You have to work hard to make it a team. Yeah. Because that makes, sometimes when you just allow the players, you think you're going to play easy. I'm going to play easy. No, you have to fight for your position.